Hello, everybody. Good afternoon. I'm Vandana Teji, and today I am amongst you to talk about something very, very important. When it comes to starting your own business, it's like a dream come true. Okay. However, a lot of business every year in India unfortunately fail. Not because people were not passionate about the business that they were starting, but because they were not mindful of a lot of things. The top three people involved in any business is first the business idea, the second is your customer base, third is the people, your employees who work along with you. Now, what happens when it comes to business idea? We do a lot of research of finalizing a business idea, concluding what should be the business all about. Right from probably getting a name for your business to finalizing and all documentation piece. Then we are worried about customer. In India, बहुत famous saying है, customer is the king. So everybody is worried about, you know, customer को कैसे खुश करना है, customer को कैसे अच्छा करना है, कैसे क्या करें, how do I go, beyond the call of duty so that the customer gives me as much business as possible. The customer is supportive of this entire scenario, that they understand that this is how things are, and this person is doing his level best, or the person is doing their level best in order to make sure the service or the product that they are providing is of the optimum quality. However, what we don't pay attention to is employees. Whenever we think about hiring employees, the other thing which comes to our mind is पैसे कैसे बचाऊं. सस्ता एम्प्लॉय लो जो ज्यादा से ज्यादा काम करे, एक एम्प्लॉय जो बहुत सारा काम कर दे, एंड मुझे कम से कम लोगों की जरूरत में, सो दैट हमको अपना ऑपरेशनल कॉस्ट हम कम कर पाए. एंड दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन. जस्ट इट्स नॉट अबाउट यू और मी. When I started my business, I was about the same thing, you know. But then I realized, how far can I run with a resource who is not qualified enough to manage my business? That person will always be a backup to me. Okay. However, that person comes with almost half the education that I have, or half the experience that I have. तो वो मेरा बैकअप कैसे बनेगा? अगर आपको अपना बैकअप बनाना है, तो बैकअप इज व्हाट इज अ क्लोन फॉर यू. Okay. And if you are getting a clone, the clone should have all the ingredients, all the skill sets, all the qualities जो आपके अंदर है. तभी वो आपके कस्टमर्स को सही से केटर कर पाएगा. Right? But when it comes to hiring an employee, why we do not think about it? क्यों हम पैसे बचाने लग जाते हैं? I know money is always scarce when it comes to starting a new business. Startups के लिए बहुत बड़ा challenge होता है getting their money in the business. And I know because I've been there. I have gone through the same scenario. But then, how far can we run with a one-legged horse? That is, how far can we run with a person half the qualities? As I am telling you, best possible thing, wherein the employee whom you've hired is having half the qualities that you as an individual or you as an entrepreneur you get to the table, you or your partner gets to the table. Please understand, business is all about strategizing. If you speak to business coaches, they will tell you that the biggest weight that you can put on a business is the weight of you on the business, your salary, your income on the business. Your time is very, very valuable. However, a person who has half the skill will also require more than half of your time, for not because they want it, but because they do not have the caliber or the capacity to run things on their own.
तो ऐसा क्या होगा, फिर you will also have a research and you will continue to lose your 50% of constructive time, which if you would have spent in customer acquisition, तो शायद आपका बिजनेस काफी ज्यादा स्टेबल और जल्दी से जल्दी आगे ग्रो कर पाए. I think for some reason my screen is not visible, so sorry for that, and I'll try a reshare. You know, hopefully this should work this time. Yes, yes, my screen is coming up. Okay, great. Today's session is going to focus how if a startup owner or an entrepreneur focus on certain HR human resources, that is your team, your people. If you focus on them, earlier you start, the better you get at the game. Moving ahead, now when it comes to building the people and the culture of an organization, what are the top mistakes as per researchers that entrepreneurs have done in the past, which have actually even led to the shutdown of companies? किसके कारण उनके बिजनेस में ताला लग गया? Number one is hiring the wrong employees. When I say the wrong employees, I just don't mean the person is wrong, but the person comes with half the skill set that you have. That's a wrong employee. Or there are times people say, I don't care about education. All I want is a person, a breathing soul who can take care of things. Rest everything मैं सिखा दूंगा. And but the sikhana, it happens only on the day one or the day two of the training. That is, when an employee joins, the maximum a owner sits and spends time with the employee is half a day. Now, after half day of experience, training, you expect this employee to perform like your clone. Is it possible? आप जहां हो, आपको पहुंचने में इतने साल और आपकी इतनी एजुकेशन और आपको इतनी मेहनत लग गई, तो एक हाफ दिन की ट्रेनिंग में जिस बंदे को आपसे शायद 10% या 20% सैलरी पे हायर किया है, वो कैसे करेगा काम? एंड ये जो एम्प्लॉइज है ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप लेके आइए हार्वर्ड से एजुकेटेड, आई डोंट वांट दैट, बट सर्टेन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड. अगर आप किसी को अकाउंट्स का काम दे रहे हो, तो उसको अकाउंटिंग का एजुकेशन तो होना चाहिए ना, उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज होना चाहिए, ताकि लेटेस्ट जो आप हो रहा है मार्केट में, वेदर इट इज जीएसटी फाइलिंग, वेदर इट इज टेकिंग केयर ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी में हर दिन चेंजेस होते हैं, हर दिन चेंजेस होते हैं. सो इफ दिस पर्सन इज समबडी हु इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड ऑलमोस्ट रेगुलरली, फिर क्या होगा? So this person is not helpful. So that's the number two mistake that a startup owner or an entrepreneur does. They do not spend time on training. They feel if I start training the people, then what happens? When we start training the people, then we have invested time and money in the person. And what if the person leaves me? And there's a famous saying, if you don't train that person, what if he continues to stay in your organization? That means you will continue to work with somebody who is not just less experienced or less educated, but is also probably making a lot of mistakes while doing your work. And a thing as sensitive as accounting can impact your business in a much, much worse way than you actually think. The next point that you have to focus is lack of alignment to organizational goal. How many of us sit down with our employees on a regular basis and tell their employees that this is what is the organizational goal? मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. अगर आप अपनी गोल नहीं बताइएगा,
तो आप कैसे एक्सपेक्ट करिएगा कि आपका एम्प्लॉय आपको 100% तरीके से सपोर्ट करे? You have to tell your vision, you have to write down your goals and give it to your employees on a regular basis, communicate it to them. उनको समझाना होगा आपको, ताकि वो आपकी तरह आपके बिजनेस गोल को समझ सके. बहुत बार when जब मैं HR थी in an organization, and now when I'm running as a HR consulting, as under the name of the unicorn people, we work with a lot of employees, जहाँ पे employees हमें बोलते हैं we don't know, we can't see the complete picture. हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा काम एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट भी ला रहा है कि नहीं ला रहा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट दिस गोल. आपका गोल क्या है? आपका गोल है, सोचिए कि आपको फर्स्ट क्वार्टर तक, सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर तक आपको कुछ 10 से 15 कस्टमर्स एक्स्ट्रा ऐड करने हैं. ओके, नाउ ये 10 से 15 कस्टमर्स आपको ऐड करने हैं, ये बात आप अपने मन में मत रखिए या सिर्फ आपके पार्टनर को मत बताइए. आपको अपने साथ साथ आपको ये चीज बतानी है आपके एम्प्लॉयज को. when you communicate and articulate it with the passion and the approach that you have in order to acquire वो 10 से 15 customers in the first quarter and whichever quarter, that's when the employees will see the bigger picture. तब आप देखिएगा लोग समझने लगेंगे कि अच्छा हमें ये अचीव करना है, शायद मुझे इसके लिए थोड़ा सा और हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन अगर ये क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारे गोल को फुलफिल करने में हेल्प करेगा. मैं हमेशा क्रिकेट के मैच का एग्जांपल देती हूँ. व्हेन आज इतनी तरक्की कर गए हैं, you have now a digital scoreboard, but the scoreboard has always remained in any match. क्यों? आपने कभी सोचा है क्यों रखते हैं स्कोरबोर्ड? अंपायर भी बता सकता है कि अभी आपका स्कोर ये हुआ है, या देयर कैन बी अ पर्सन हु कैन अनाउंस इन बिटवीन, आफ्टर एवरी ओवर, the way they already do that, after the finish of this over, that there is this party has made so many runs, and with so many loss of wickets, and those so many things remaining to go, they actually go ahead and write it in front of the batsman or write it in front of the entire players. Why? Because they know when if in order to drive observe in order to ensure that the chase factor, you came chase, release that chase factor, you must put the goal in front of the person where it is visible. जब कोई रनर दौड़ता है तो उसको क्या दिखता है? फिनिश लाइन दिखती है, and that finish line is nothing but the goal. जब अर्जुन ने शायद तीर चलाई होगी तो उसको क्या दिखी थी? मछली की आंख दिखी थी. The only thing that was visible to him was the fish's eye. In short, in nutshell, if you have a goal, communicate it and put it in front of your employees so that you and your employees can see it. As simple as अगर आपका ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस के एंट्री बोर्ड पे लिख दीजिए कि गोल फॉर दिस क्वार्टर इज दिस. नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. बहुत फायदा होता है. मूविंग अहेड टू डिसहार्मनी अमोंग्स्ट द टीम. क्या होता है कि जब आपके लोग होते हैं उनको पास में आपने क्या किया? आपने उनके बीच में कनेक्शन नहीं बनने दिया. आप उनको एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हो. अच्छा, अकाउंट्स का काम है तो रमेश को बुला लो. HR का काम, एडमिन का काम है तो सुरेश को बुला लो. अगर आपको वॉट एवर वर्क इज देयर, यू हैव सम पर्सन, बट यू नेवर अलाउ देम टू कनेक्ट. अगर वो पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स देयर लुकआउट, नॉट मच टू डू. करेक्ट? सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? डिसहार्मनी अमॉन्ग्स द टीम बहुत कॉमन है.
टीम मेंबर्स के बीच में आपस झगड़ा हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, बट इन बातों से क्या बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? आइडली तो नहीं, बट वी नो द रियलिटी. We know the reality that disharmony amongst the team have actually led to the shutdown of the organizations. तो इस चीज को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज के लिए चेंज करने के लिए आपको फन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने होंगे. Fun activities as simple as, after the office you go together, have lunch or dinner with your or with your team members, wherein they are not in a professional setup but in a casual setup, and you yourself can break the ice by talking casually with your employees. The moment they start opening up, आप देखिएगा एक अलग कनेक्शन बन जाता है. सभी लोग बात करते हैं जापान के एम्प्लॉयज के बारे में. जापान में एम्प्लॉयर लॉयल्टी नाम की चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और वो एक दिन में नहीं हुई. द रीजन जापान इज वेयर no other country or most of the countries in the world are struggling to be, is because of their work culture, their trust that they show in their own employees. Believe me, you give 10% of your time in building this harmony among your team, I'm telling you the return will be doubled, at least 5x, not even doubled. I'm there, doubled is very less. I'm talking, it will lead to 5x returns. Maybe you might have spent some money, probably dinner में कुछ पैसा लग गया, या कुछ आपने फन एक्टिविटी कराई, आप अपने एम्प्लॉयज को अम्यूजमेंट पार्क लेके गए, या आपने एक आउटिंग पिकनिक प्लान कर लिया, या फिर आपने एक ऑफिस में ही किसी को बुला लिया फन एक्टिविटीज करने के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी में ले गए. दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन डू. एंड बिलीव मी, इस तरह के कैजुअल सेटअप में जो बॉन्ड्स बनते हैं टीम के बीच में, दे आर अनब्रेकेबल, दे आर टोटली अनब्रेकेबल. सो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वी एज एंटरप्रेन्योर्स, वी एज बिजनेस ओनर्स फोकस ऑन बिल्डिंग द हार्मनी. हफ्ते में एक बार एक फन एक्टिविटी रखिए, महीने में एक बार एक फन एक्टिविटी रखिए, वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल, बट डू कीप इट. बहुत जरूरी है. Lack of appreciation again. Now what happens in the daily rut? We as human being, we are wired to see the gaps. Seldom do we notice कि कौन अच्छा कर रहा है. आप देखोगे, आपको दूर से आप जब खड़े रहते हो ना, तो कहीं किसी के किसी के शर्ट के ऊपर कुछ एक बूंद अगर कुछ लगा हुआ है, आपको वो दूर से दिख जाएगा. ये बहुत मजेदार बात होती है. लेकिन आप उसी इंसान के फेस पे ध्यान नहीं दोगे कि उसने कभी कोई बढ़िया सा हेयर कट करा रखा है, न्यू हेयर स्टाइल चेंज किया है, या कुछ नया पहन रखा है, कुछ अलग तरीके की शर्ट ही पहन रखी है जो उसने आज तक एफर्ट डाल के कभी पहना नहीं था. बट वी नेवर रिकॉग्नाइज दैट. एंड सेम थिंग हैपेंस विथ वर्क. Employees work every day, day in and day out. They put their 110% in work. मगर होता क्या है? There are some days, जब क्लाइंट आपको बोलता है कि अरे बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके बंदे ने, then you realize, oh my God, let me just go and tell this person that you did amazing work. But that person really doesn't wait for the client's appreciation. That person waits for your appreciation, your attention, your recognition. And believe me, this recognition is far beyond any money, any reward, any trophy would do. Just a pat on the back of the person who made that extra effort. So pay attention to your employees. Look around, take time. Because you as a business leader, if you want to build a culture of harmony, trust, and you want to build your A team, what do you have to do? You have to ensure that you're checking all these things that I've just spoken about in your list. बहुत जरूरी है कि आप इस बात पे फोकस करें कि कैसे
आप एक कंपनी बनाओगे जहां पे आपके सारे लोग जुड़ के एक बन के काम करेंगे यूनिटी से. Now what happens again is, a lot of small entrepreneurs, they tell me, Vandana, these are all too technical for us as a small company. तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगी, if you start early, you make those, set early. क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट सेटिंग. अगर आप जल्दी शुरू करते हो, कहते हैं ना, ब्रश करना शुरू करते हैं ना, सुबह शाम बच्चों को ब्रश कराओ, टाइम पे सुलाओ, टाइम पे उठाओ. इट इज ऑल अबाउट हैबिट बिल्डिंग. This doesn't matter your size. All this, I'm telling you, if you is almost negligible when it comes to money that you put into it. But the effort that you put gets at least 5x, gives you at least 5x the returns. So I think every penny spent is like more than $1 earned. So make the right choices. Build an organization where everybody loves to work. And believe me, the culture that you see in an organization, the positivity in such an organization is infectious. It not just you, anybody from outside stepping into that organization, they get to know it. They get to know it. You feel it. The world knows about the loyalty and that Japanese show to their companies. I know things have changed in the recent past, but then that has been the scenario, while the rest of the world is still struggling to achieve it. Now, here are a few things that I think every entrepreneur should be aware when it comes to HR, human resource management. And I love to use the word human capital management or people management, because they're your people. Employee management. When it comes to employee management, these are the things that you as an entrepreneur will have to focus on. You'll have to focus on getting the fundamental structure right. जब सही नींव पड़ेगी, जब सही फ्रेमवर्क तैयार होगा, तभी आपकी जो कंपनी की जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो स्ट्रांगली खड़ी हो पाएगी. नहीं तो एक हवा का झोंका आएगा and everything will get shattered. And that is something that nobody wants to happen to their own business. So let's begin with organization design. What is organization design? होता क्या है? We have to, in this organization design, we will have to ensure what is gonna be, the basic fundamentals of your organization. What is gonna be the culture of your organization? What are your values? What is your mission, your vision in life? What are the type of employees that you want to hire? What do you pay more attention to? Do you pay attention to skill or your behavior? All this will tell a lot about what kind of an organization you will see in the future. Employee handbook. The employee handbook is nothing but a set of guidelines, okay, guidelines which has been, policies which you formulate for the employees and put it for them to be referred. It can be put on an intranet, or you can print it and give it as a small booklet to your employees, because it helps them to navigate through different situations. There is a list that I will actually circulate, that's called the checklist, okay, which we have created specifically for entrepreneurs, जहाँ पे हमने आपको बताया है कि एक एम्प्लॉय हैंडबुक में एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए when it comes to from a startup or a small business perspective. मिनिमम क्या बेसिक मिनिमम होना चाहिए, वो सब हम आपको बताएंगे. Recruitment is again,
The person who is recruiting is like the person who's deciding a lot of things. That person is deciding not just who comes into the organization, but also what an organization will look like, what kind of a behavior that the person is getting into, what are the skill set that the person is getting into. Hence, it is important to sit down and chalk out a plan for recruitment. A lot of times, people don't spend time before recruiting. When it comes to recruitment, people think, अच्छा ये हायर करना मुझे एक MIS का बंदा चाहिए, ऐसा बोल देते हैं. एंड देन आप मार्केट में बोलते हो कि मुझे एक MIS का बंदा चाहिए, MS का बंदा ला के दो. When the person gets you the MIS का बंदा and आप उस बंदे को हायर भी कर लेते हो, but then when the person starts working, तो आपको रियलाइज होता है, अरे इसको तो MIS तो आता है, लेकिन अगर ये मतलब थोड़ा सा सेल्स कोऑर्डिनेशन भी मैनेज कर लेता, या फिर अरे ये थोड़ा सा मेरा क्लाइंट का थोड़ा ये एडमिन वर्क भी देख लेता, आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन हो जाता है. लेकिन नाउ इट इज टू लेट. फिर आप क्या करते हो, फिर तुरंत आप सोचते हो ना कि इसको तो निकाल देते हैं, एंड देन यू थ्रो दैट पर्सन अवे. Now, the moment you remove that person from an organization, it is not just impacting the person; it is impacting the reputation of your organization in the market, and that word is gonna spread like a wildfire across countries. Everybody will get to know that this company has a hire and fire situation. The moment this news gets out in the market, you will start facing issues when it comes to recruiting. Nobody will apply to your open positions. I know in India you always need people. People are, the population is big and huge, and you can always get the right resource. That is what we assume. But believe me, I work in the HR consulting field and I do a lot of recruitment. Getting the right person for the right job is such a difficult task, specifically because of certain skill sets that you need. Hence, please pay attention. Please plan the recruitment process and ensure that the person who is hiring is managing, ensuring that the candidate experience is not spoiled. Yep. Onboarding and induction. So now you have the employee handbook. But when you onboard, not many people actually spend time on onboarding or induction. So जब आप किसी को recruit करते हो, that person comes newly to your organization. Now this person is somebody who is like a guest to your organization on the very first day. जब आपके घर में नया गेस्ट आता है, न्यू मेंबर आता है, तो आप उनको क्या करते हो, आप अपनी कंपनी के बारे में जब तक आप बताओगे नहीं कि मेरी कंपनी का ये वैल्यू है, ये थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे हम ऐसे काम करते हैं, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, and we believe in everybody's vision, and we give you the total authority to speak your mind, and there is no harm in coming back and asking questions. So this is these kind of, when will the person get to know? They will never get to know until you tell them. So ये onboarding में हम ये बताते हैं, this is ये है, this is our family, meet our family, and in our family he is the head of the family, and ये हमारा culture है, हम सबको equal respect देते हैं. So all this is very very important. Plus this is the opportunity where the new hire comes. उसकी कुछ questions होती हैं, जैसे मुझे कितनी leave मिलेंगी, मेरी salary कब आएगी, और अगर मुझे लेट हो गया तो क्या होगा. इस तरह की सारी बातें आप उसको पॉलिसी हैंडबुक देते हो, बताते हो कि क्या, और इसके अलावा आपकी कंपनी उसको क्या बेनिफिट देगी, सैलरी आपको चेक में मिलेगा या आपके बैंक अकाउंट में आएगा. ऑल दिस is something that should be answered within a week of the person's joining, if possible on the day. मगर on the day अगर नहीं हो पाता है, within a week, 15 days तक आप ये काम जरूर करिए, so that the employee feels guided. Doesn't feel they don't feel lost. कॉम्प एंड पेन की बात हमने करी. फिर कंप्लायंस, पेरोल एंड कंप्लायंस. अगेन पेरोल के नॉर्म्स बहुत ही ज्यादा, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इंडिया में, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है.
एंड एक एक हर एक एम्प्लॉयर को, हर कंपनी को एक सेट ऑफ कंप्लायंसेस करनी होती हैं, जिनका उनको ध्यान रखना पड़ता है। हर महीने में आपको फाइलिंग करनी होती है। एक मीडियम से लार्ज साइज कंपनी में कुछ 93 टाइप्स की फाइलिंग होती है इन अ ईयर। सो दैट्स हाउ स्ट्रिंजेंट, एंड मुझे पता है इसके लिए काफी काफी दिक्कत होती है। So it's always better to get the right kind of people onboarded so that you don't fall in a soup. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप जब एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको बताएं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका गोल क्या है, what are they hired for, and once they are hired they should actually, their performance should be managed. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जब गलती करे तो उसको चिल्ला के डांट दिया जाए। गलती करने से को डांट देने से बंदा कभी नहीं सीखेगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गलती करता है तो हम उसके साथ बैठ करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गलती क्यों हुई। द रूट कॉज एनालिसिस हैज टू बी डन, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन। एंड जब समझ में आता है कि बंदे में, योर एम्प्लॉय हैज सम स्किल गैप, you as an employer will have to support the person to fill that skill gap. एंड अगर कोई विल गैप है तो भी उसे वार्निंग मिल जाएगी कि आप अगर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करोगे तो कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है आपके ऊपर। बट द कंपनी इज ट्राइंग टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल ways so that you can keep the salary and the performance is always as per the required target. कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आप देखोगे तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 years there is a change of technology. पहले की तरह नहीं है। जब जब इंटरनेट नहीं आया था तो one change used to take almost like a decade, almost like 10 years to come in. लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज चीजें बहुत ही रफ्तार से चल रही है, बहुत ही तेज चल रही हैं, जिसके कारण इट इज इम्पोर्टेंट दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब हम उसका कर रहे हैं रेगुलरली होते रहे, ताकि आपके एम्प्लॉयज का स्किल सेट मार्केट में चेंजिंग स्किल सेट से मैच होता जाए। वर्क प्लेस कल्चर एंड एंगेजमेंट, अगेन मैंने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है कि कैसे आप अपने कल्चर पे, अपनी हार्मनी बिल्डिंग पे हेल्प करो एम्प्लॉयज को, सो दैट यू हैव अ पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड योर एम्प्लॉयज वर्क विथ यू, नॉट फॉर यू। अगेन एग्जिट मैनेजमेंट, मैंने ये भी बहुत देखा है कि जैसे ही एम्प्लॉय एग्जिट डालता है वो आपका दुश्मन हो जाता है, बहुत कॉमन है। एंड दिस इज समथिंग विच इज रिगार्डलेस ऑफ द कंपनीज लेवल और द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होता है, हर किसी को ग्रोथ चाहिए। अगर आपकी कंपनी इतने पैसे से ज्यादा पैसा नहीं दे सकती है, या आपकी कंपनी एक ही स्किल सेट पे 10 साल से काम कर रही है, तो वो बंदा, वो दैट पर्सन इज नॉट ग्रोइंग एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। एंड समटाइम्स पीपल चेंज, दैट इज द नेचर, यू नो। आप शायद उनको ग्रोथ भी दे दो, आप उनको पैसा भी दे दो, फिर भी वो आपको जॉब छोड़ के चले जाएंगे। But please understand, whether to work or not to work is a voluntary decision. You can never force anybody to work. So why burn bridges? Why get angry when an employee resigns? They are the same people who have stood beside you when the business was not doing well, or when the business needed extra hours to put in. मगर आज जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो वो दुश्मन कैसे होगा? You will be a true winner as an employer or an entrepreneur if these employees who are leaving you come back and rejoin. That will tell you that you treated them well and they love you. And now when they have come back, they're going to stay for a very long time. So that's in a nutshell what all you as an employee should be, you as an employer should be aware of. Very, very important that you pay attention to each and every thing that is happening to your organization. All these things that we discussed have been picked up from various researches and also from live cases that we work with employers across the world.
Here are a list of services that we offer, and any help or support, we are always ready to guide and help you people. I am now open for questions. You can use the chat window to put in questions. Rumi, do we have any questions? Okay. Thank you, everybody. Thank you.